Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, so today we are going to do cervical cerclage, the green top guidelines. Okay, so first of all, we all know the basics. Okay, you should know these figures that are 11 to 14 weeks. Okay, then we have 16 to 24 weeks. Then we have a one figure of 18 to 22 weeks. And then there is one of 27 plus 6 weeks, then 34 days. Okay, so these are the main things in this whole guideline. So you should know that if a patient is giving history, we all know this is basic, 3 or more than 3 preterm births or second trimester miscarriages, then she is a candidate for exactly history based surclass. Okay, so, if the patient, this is history indicated cerclage and this is prophylactic, okay? You do it from 11 to 14 weeks after carrying out a proper scan for any pleurisy. And the question is, why do we do it at 11 to 14 weeks? Why not later? Why not earlier? Because from 11 to 14 weeks we can find enough we can see major defects on scan. Of course, anomaly scan is not done until that, but we can see any sort of major anencephaly, or NTS can also be done. NTS is done from 11 to 13 plus 6 weeks, so major defects are visible by then. So that's why 11 to 14 is fine for doing the history based. Now remember, it is a prophylactic cerclage and asymptomatic women. It's a planned procedure. You don't have to do TVS for this. It's not related to cervical length. You just do it based on history. Just do it. Okay. Then we have the ultrasound, the second type of cerclage, which is the ultrasound indicated. Okay. So for this one, you should first of all go to somewhere else. That is the element 5 of saving babies lives care bundle. अब एक पीपीएच बंडल था, अभी एक और बंडल भी आ गया सर पे. बस बंडल्स हमारे सर पे जमा हुए जा रहे हैं. ओके, so this has this element 5. This actually classifies women in 2 categories: the one who are having high risk and then with intermediate risk. High risk women should be reviewed by a preterm prevention specialist. जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारे preterm prevention specialists बैठे हुए हैं ना, but you should be they should be reviewed by them by 12 weeks or with dating scan. And for these women, first of all, ये औरतें होती कौन है? हाई रिस्क कौन कौन सी खवातीन होंगी? पहले ऑब्वियसली दिस इज कॉमन सेंस. ओके, डोंट हैव टू मेमोराइज दिस. जिसको पहले सर्कलाज लगाओ, हिस्ट्री ऑफ सर्कलाज, जिसको पहले प्रीटर्म बर्थ हुई हो या फिर सेकेंड ट्रिमेस्टर मिसकैरेज, मतलब कि फ्रॉम 16 to 34 वीक्स की बर्थ, जिसको पहले प्री प्रॉम हुआ हो, पी प्रॉम, राइट? एंड देन द वंस विद नॉन यूटेरिन वेरिएंट और इंट्रा यूटेरिन एडिशंस और ट्रेकिलेक्टमी. ओके, ट्रेकिलेक्टमी में ऑलरेडी सर्वाइकल इनसफिशिएंसी का मसला होता है. सो दीज थिंग्स, ओके, ऑल दीज इंडिकेशंस, पी प्रॉम एट लेस देन 34 वीक्स एंड 16 to 34 वीक्स पे उसकी डिलीवरी हुई, अगर प्रीवियस सर्कलाज अगर लगाया, उसे नॉन यूटेरिन वेरिएंट या इंट्रा यूटेरिन एडिशंस हैं या ट्रेकिलेक्टमी, इन 5 चीज़ों अगर कोई एक चीज़ भी उस औरत में हुई भी है तो शी शुड अंडरगो TVS सर्वाइकल स्क्रीनिंग. That is every 2 to 4 weeks between 16 to 24 और फिर 16 से 24 weeks के दरमियान आपने उसका TVS करना है सर्वाइकल लेंथ के लिए every 2 to 4 weeks. Guys, remember that. Okay, then we have the women at intermediate risk. Now the women who are at intermediate risk, they basically, who are they? सबसे पहले तो अच्छा, अब इनका है कि अब बड़ी अजीब सी बात है कि फुली का सिजेरियन अगर हुआ है ना, फुली का सिजेरियन कितना हम कैजुअल लेते हैं, लेकिन अगर प्रीवियस फुली पे सिजेरियन हुआ है या फिर कोई सिग्निफिकेंट सर्वाइकल सर्जरी हुई है, जैसे कि ये ब्लर हो गया कैमरा, जैसे कि लेट्स प्रोसीजर हुआ है, और लेट्स हर लेट्स वाली खातून नहीं, जिनकी डेप्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा की आपने एक्सेशन ली है उनमें, ठीक है, एंड इन मोर देन वन प्रोसीजर, फॉर एग्जाम्पल कोन बायोप्सी भी साथ हुई हुई है, तो उनमें आपने इंटरमीडिएट है ना, तो ऐसे शुरू नहीं हो जाना कि हर 2 हफ्ते बाद, हर 4 हफ्ते बाद और बस करते रहो 16, वो हाई रिस्क में था. इनमें आपने बस एक दफ़ा करना है TVS. 18 से बस एक दफ़ा आप करवा लें, आपकी मेहरबानी होगी, फ्रॉम 18 to 22 वीक्स. ठीक है, आई होप गाइस में ना करवा लीजिएगा अगली पेशेंट में. ठीक है, अच्छा जी,
उसके बाद तो ये हो गया एलिमेंट 5 ऑफ सेविंग बेबीज लाइफ केयर बंडल। ये आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, ये बुकिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके दिमाग में रहे। आप इन प्लान लिखेंगे किस किस का आप टीवीएस कराएंगे फॉर सर्वाइकल स्क्रीनिंग और कब कराएंगे, ठीक है। हर किसी का 16 से 24 में नहीं कराना। जो इंटरमीडिएट रिस्क है उनका कब तक, अब 18 से 22 वीक्स में सिर्फ एक ही दफ़ा करवाना है, ये नहीं कि आप इंटरमीडिएट की सर्वेलेंस शुरू करा दें, ठीक है, ओवर नहीं होते। ओके, नाउ बेसिकली we are done with this, right? Now this ultrasound, this will be ultrasound indicated cerclage। अगर इसमें यानी कि जो हमने पूरी सर्वेलेंस पढ़ी है, during this surveillance at any point if the cervical length is less than 2.5 centimeters, that is 25 mm, then you're going to go for it, okay? अब ये थेरेप्यूटिक है क्योंकि ये हमें अब लेंथ छोटी नज़र आई है तो हमने लगाया है। अब इसका ये है कि खातून सिम्टोमेटिक ना हो और उसमें एक्सपोज्ड फीटल मेम्ब्रेन्स ना हो वजाइना में, ठीक है। अब इस जो टीवीएस हम कर रहे हैं, ये मतलब ये हम सीरियल सोनोग्राफिकल सर्विलेंस करें, हम कब से कब तक करें, 14 से 24। वो तो बंडल में इन्होंने सर्विलेंस के, वैसे मतलब टीवीएस हम 14 से 24 तक करते हैं सर्वाइकल लेंथ के लिए, मतलब इसके बाद, इससे पहले नहीं। तो ये अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कलाज भी इसी ड्यूरेशन में लगेगा। मतलब जब हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज का टाइम ख़त्म हुआ है 14 वीक्स पर, तब जो है वो अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कलाज का टाइम शुरू हुआ है 14 वीक्स पे। वाओ, व्हाट अ पॉइंट गाइस। अच्छा, सो बेसिकली बोंगियाँ मार के मैं खुश होती रहती हूँ। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू टीवीएस। अब रिमेंबर दैट दिस टीवीएस इज टू बी डन ऑन एन एम्प्टी ब्लैडर, ओके, एम्प्टी ब्लैडर।